Hello listeners, welcome to Bol Hyderabad 90.4 FM and this is your very own RJ Ketki. So today in our very new segment, first episode of Poshan Gyan. Poshan Gyan, we have an esteemed and renowned name with us, that's Dr. Poonam Singhal. So hello Poonam, how are you? Hi Ketki, I'm good. How are you? I'm fine too. So Poonam, let's go to our today's topic directly, oils and trans fat. So first question I have for you is the general one, that is what are the main differences between saturated, unsaturated and trans fats? Okay. So saturated fats are the ones which do not have a double bond and which are solid at room temperature, like your ghee, vanaspati. And unsaturated fats are ones which have double bonds in them, in the chemical structure. And you will find them liquid at the room temperature, like your different refined oils like sunflower oil, groundnut oil. These oils are unsaturated fats. And then there is a third category which is trans fats. Now these trans fats basically they come from a process called hydrogenation, which is a conversion of oils to solid fats. And these trans fats are really unhealthy. Because the molecular structure is such that it gets blocked in your arteries and it is really bad for your heart health. Vanaspati, dalda, these are all trans fats, and when you even fry the oil, trans fats are formed during the process. Okay. So how do refined oils differ from cold press or unrefined oils? See, refined oils are processed oils. So they are processed under high heat and use of chemicals. So bleaching agents are used in refined oils to make it look good and to add on to the aesthetic value. So see, for a customer, if the oil is really nicely packaged and it is looking nice and transparent, the customer will buy it. So that is why the processing is done to increase the aesthetic value. Whereas your cold pressed oils, these are unprocessed oils, and you simply take your raw material, which can be your nuts, almonds or groundnuts, whatever is the substrate. You take the raw material and just press it. So it can be a wood pressed oil which is pressed with the help of a wooden thing, or it can be hydraulic press. So cold pressed oil is basically more raw and it will retain more nutrients, whereas processed oils, the nutrients will be lost, all the antioxidants and all the good quality of oil will be lost. The only thing which is there is the aesthetics. As in we get the oil in their purest form if they are cold pressed, and if they are refined, those are basically contaminated, but we think they are pure. Yeah, they are basically loaded with so many chemicals that it is not good for our health, because nutrients are lost and you are just eating oil without any nutrients, just calories. Okay, but in cold pressed oils you have all the plant solids which are there actually in the plant product. And when you're pressing it, there is no heat treatment, there's no chemical which is added, so you retain all those good elements of a plant. Are all vegetable oils healthy, or some should be avoided? See, there are vegetable oils. These days we are talking a lot about palm oils. That is also a vegetable oil, and that has, lot of saturated fats. So that is something which we really need to avoid, and most of your processed foods and all, they all are loaded with palm oil. So palm oil needs to be avoided. Whereas if you see vegetable oils, if they are taken in limited quantities and cold pressed, then I don't think that there is any harm, and you need to maintain a balance. What is the healthiest oil for daily cooking in Indian household? As if it even exists. See, there is no one healthy oil which we can use in our Indian kitchens. We have a variety of oils in the market, and
it sometimes becomes very difficult to choose which one to use in our Indian kitchen. So I would say that you should use a blend of oils. Like suppose if you are giving a tadka in a dal, then you can use ghee. If you are using, making pasta or pizza, you can use olive oil. If you are making a sabzi, like a dry sabzi, you can use mustard oil. So different oils to be used for different preparations. So there is no one oil that you should use. Different oils to be used for different cuisines and preparations. How much oil should an average adult consume in a day? See, ICMR has laid guidelines on oil consumption, and they have said that you should not consume more than 30% of your calories in a day. That means if you are eating 2000 calories, 30% should come from oils. And if I talk about how many spoons and all that, so I would say 3 to 5 teaspoons of oil should be used in a day, depending on your physical exercise and depending on your age and any physiological condition. So there is a guideline which says that one should consume 500 ml of oil in a month. That's it. So just imagine half a liter of oil you have to consume in the whole month. So that means if you are consuming 3 to 4 or 5 teaspoons, 1 gram of oil gives you 9 calories and 1 teaspoon has 5 ml. That means 1 teaspoon is giving you 45 calories. So you have to limit the consumption. You can just maybe say 1 teaspoon in your breakfast, 1 in your lunch and 1 for dinner. Enough. That's it. And somewhere in the mid time snack or something you have snacking also with something, add 1 more. So 4 teaspoons of oil in a day. So, which oils are best for high heat cooking or frying? Which oils are best for high heat? Okay. See, for frying, there are various oils like groundnut oil, mustard oil, and even ghee. So, when you're choosing an oil for frying, you should look for a high smoke. Now, what is this smoke point? It is a point where you see the smoke. When you are heating the oil, there is a point when smoke starts coming, right? True. So that is the point, and you should choose oils which have a higher temperature of, that is mentioned on the package also. So which says like 130, 140 degrees Celsius. So those who have a higher smoke point, you should choose those oils because they will be oxidized later. When we heat oil, what is happening? The oil is getting oxidized and it will be broken down into free fatty acids. So we want more time so that the oxidation process is delayed. Okay, so higher smoke point is something that we should look for in oils when we are choosing the. And which oils, as in we use lot of raw oils, as in Yes. for podis or chutneys, we can say, or for salads. Yes. So, which oils retain nutrients best when used raw? Yeah, so for that, if you say salads and some salad dressings, olive oil is the best, and it should be used raw, and it should not be cooked at high temperature at all. So olive oil for salads and all. Then other oils which can be used raw can be your sesame or coconut oil also can be used in some of the chutney. You mentioned olive oil. So, does heating olive oil makes it unhealthy? Olive oil actually is not meant for heating and frying purpose, but in Indian homes it is seen that we are making puris in olive oil, which is it is not meant for that. It gives you the best results when it is used with salads, with the pizzas or pasta. Okay, it is used on top, not as a heating thing. So for heating you can use, there are so many other oils that you can use, rice bran, safflower, sunflower. So why to use only olive oil? I know, I think there was a narrative which was set for the olive oil few years back, that olive oil is good for heart. It is good for heart, but हमारे अपने इंडियन ऑयल्स में भी कोई कमी नहीं है. मस्टर्ड ऑयल भी इक्वली गुड है.
So it has antioxidant properties and it has anti-inflammatory properties. It is so good for हमारे नानी दादी कब से mustard oil use करते आ रहे हैं. And if you go to north or even east of India, mustard oil is used raw. It is not even cooked. एंड इफ़ यू झालमुरी वगैरह अगर आप देखोगे तो वो मस्टर्ड ऑयल डालते हैं और उसका एक बहुत ही पेक्यूलियर फ्लेवर है रॉ मस्टर्ड ऑयल का. तो it has been used since ages and we are forgetting our traditional oils, I feel. Is it good to mix different oils for cooking, like sunflower and mustard, or that is Combination of oils, yes. These days you are also getting blended oils in the market. Okay. So you can use blended oils because one oil has one property, the other has the other property. And if you want to both the properties, then you can mix them. Okay. So you can use blended oils. So they are available in the market. What are the signs that an oil has gone rancid or has lost its quality? Yes. See, when we buy oil, sometimes we buy huge packs and we store it. So when we are storing, it is undergoing a process of oxidation. So during that process, it gives a smell, an obnoxious odor is there if you keep namkeens and biscuits for very long. Have you ever experienced a different obnoxious smell which comes? So that foul smell indicates that your oil is getting rancid. So that off flavor and rancid flavor, so we should not use rancid oils because it has undergone a process of oxidation and then a lot of free radicals are generated in the body. So why to do that, and they cause cell death. So it's better that you buy oils in less quantity and use it and then again buy As in it. avoid storage for Yes. long span. Yes, long storage should be avoided. Now we come back to सबसे sensitive topic, that is heart की health. Because oils intake are mostly connected to heart का health. So which oils are best for heart's health? See, I would say you have to limit the quantity of your oil. See, no oil is good for your heart health. अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो कोई भी ऑयल अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप लिमिट में खाएंगे तो कुछ ऑयल्स हैं जैसे राइस ब्रान ऑयल हो गया, दैट इज़ गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ. एंड देन मस्टर्ड ऑयल ऑल्सो इज़ गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ. इट हैज़ इरूसिक एसिड विच इज़ गुड एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी. तो वही है. सी, वी हैव टू चूज. एंड देन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का हमें खास ख्याल रखना है व्हेन इट कम्स टू हार्ट हेल्थ. तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिन जिन ऑयल में है, like your fish oil has a lot of omega 3, so you can consume fish directly. And flaxseed oil हो गया जो omega 3 से loaded है. Then you have chia seeds, you have rice bran, as I said. So all these oils in which omega 3 and omega 6 fatty acids are in good ratio, you should consume. Are coconut and ghee actually healthy fats, or should they be limited? See, coconut and ghee both are saturated fats. So I would say जैसे अगर हमें बच्चों को देना है तो हम घी दे सकते हैं, लेकिन हम खुद भी खा सकते हैं, बट हमें उसका कहीं ना कहीं क्वांटिटी लिमिट करना है. सो वी कैन नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टन एक्सटेंट. सो इट हैज़ टू बी लाइक only 1 teaspoon of ghee in a day, not more than that. How do oils affect cholesterol levels? सी, कोलेस्ट्रॉल जो है एक ऐसी चीज़ है जो आपकी शरीर में खुद भी बनती है. इट्स नॉट दैट इट इज़ सप्लाइड ओनली बाय योर डाइट. योर बॉडी मेक्स इट, बट देन अब हम ऑयल्स खाते हैं या सैचुरेटेड फैट ज़्यादा खाते हैं तो डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है. तो फिर हमें कहीं ना कहीं अपने ऑयल्स का इंटेक जो है मॉनिटर करना पड़ता है. सो डेफिनेटली cholesterol is something that should be taken care of when you are consuming oil. Are seed oils like sunflower, safflower, soya bean inflammatory? No, they are not inflammatory. I would not say that they are inflammatory because plant
सोर्सेज से निकले हैं एंड दे हैव देयर ओन गुडनेस. एंड इफ दे आर कोल्ड प्रेस्ड, अगेन आई वुड से द क्वांटिटी मैटर्स. सी, कोई भी चीज़ इन्फ्लेमेटरी हो सकती है बॉडी में जाके अगर हम उसकी एक मात्रा से ज़्यादा खाएंगे तो प्लांट जो सीड से हमारे ऑयल्स बनते हैं वो सभी हेल्दी हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है कि दे आर इन्फ्लेमेटरी. बट ये है बिकॉज दे आर अनसैचुरेटेड, दे ऑक्सीडाइज अर्ली. वो जल्दी रैंसिड हो जाते हैं और जल्दी बिकॉज उनमें डबल बॉन्ड ज़्यादा हैं तो वो रैंसिडिटी दे कैन बी गेट रैंसिड अर्ली. What oils help with weight management or fat loss if used in proper? देखिए, वेट मैनेजमेंट के लिए तो अगर आप वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम पे हैं तो सबसे पहले आपको आपकी डाइटिशियन बोलेगी कि क्विट ऑयल्स एंड ऑयली फूड, है ना. आपको मतलब सुना ही होगा आपने, बोलेगी सबसे पहले फ्राइड फूड छोड़ दो. तो ऑयल का कहीं सवाल ही नहीं आता वेट लॉस मैनेजमेंट प्रोग्राम पे अगर हैं तो आपको जो है थोड़ा दूर रहना पड़ेगा ऑयल से. आपको बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटीज़ में खाना है क्योंकि अगेन कैलोरी डेंस है, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है. आप खा सकते हैं, घी ले सकते हैं, 1 चम्मच घी लिया, अलग अलग फॉर्म में उसको यूज़ कर लिया, थोड़ा रोटी पे लगा लिया या थोड़ा तड़के में डाल लिया, इट्स ओके. हमारे यहाँ पे मतलब दादी नानी के नुस्खे पे मुझे बहुत बार ये नुस्खा मिला है कि अगर यू हैव डाइजेशन इश्यू और आपका पेट अपसेट है तो घर पे बना हुआ काऊ का घी थोड़ा आधा चम्मच खाओ. इट हेल्प्स फॉर लुब्रिकेशन. हाँ, इवन इन प्रेगनेंसी बोलते हैं कि भाई प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए वो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है और बच्चा इजीली डिलीवर करने में इजी रहता है. तो और गोंद के लड्डू सब घी में ही तो बनते हैं. लड्डू हो गए, शीरा हो गया, जो एक प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं हम, तो वो सारी चीज़ें देसी घी में बनती हैं. वो तो सदियों से एक प्रथा चली आ रही है एंड इट रियली हेल्प्स. लेकिन व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस एंड वेट मैनेजमेंट तो कहीं ना कहीं हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है. लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन फेजेस ऑफ लाइफ कि आप किस फेज़ में हैं. अब जैसे बच्चे को घी देंगे हम, प्रेग्नेंट लेडी को घी देंगे, लेकिन अगर जो वेट लॉस प्रोग्राम पे है उसको हम बहुत सारा घी नहीं बोलेंगे ना. नहीं, बहुत सारा नहीं, हाफ अ स्पून और समथिंग. हाँ, 1 teaspoon he can happily have in the whole day. एंड इफ इट्स स्पेशली काउज गाय का घी अच्छा रहता है बिल्कुल. और एक मतलब मैं जिस फेज से गई हूँ, आई हैड अ सी सेक्शन, डॉक्टर ने मुझे घी कम खाने को बोला था. आजकल के डॉक्टर्स तो मना करते हैं लेकिन हमारी मम्मियाँ बोलती हैं कि नहीं खाओ. सो इट्स क्लैश बिटवीन द ओल्ड एज एंड द न्यू एज पीपल. सो वो हमेशा रहेगा क्लैश, क्योंकि हमारी मम्मियाँ बोलती थी काजल लगाती थी वो बादाम का घर पे बना के. आजकल के डॉक्टर्स बोलते हैं आँख में कोई कुछ भी मत लगाओ, कोई काजल वाजल नहीं. सो आई थिंक देखिए, न्यू एज डॉक्टर्स की अपनी फिलॉसफी है कि उनका ये कहना है कि क्यों इतना मोटापा प्रेगनेंसी में, वैसे ही आप आप वेट गेन करते हो और फिर घी खा खा के आप और वेट गेन करोगे. तो उनका जो एंगल है वो अलग है देखने का कि आजकल सबको शेप में चाहिए बॉडी. पीपल आर हेल्थ कॉन्शियस. जस्ट आफ्टर 6 months ओनली you must have seen women running around and they want to shed their weight. So they want to come back to their original weight and shape. तो उसको मद्देनजर everybody is doing, yeah. So what's the role of omega-3 and omega-6 fatty acids and how can we balance them through oil choices? Yes, omega-3, as I said, very important. Alpha linolenic and alpha linoleic acids both are important for brain development, for heart functioning. तो ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट फैटी एसिड्स हैं जिनका हमको ध्यान रखना है. और ये जैसे मैंने बोला मस्टर्ड ऑयल में, सनफ्लावर ऑयल में, in different variety of oils you will find all of these oils, these fatty acids. And so basically you have to keep rotating your oils so that you get all the benefits from all the oils. So every month you should keep rotating your oils. So हर month अगर आप change करेंगे, जैसे आप घी तो देखिए चपाती और तड़के में लगता ही है, घी एक रखिए. फिर ऑलिव ऑयल ड्रेसिंग वगैरह में यूज़ होता है,
या आप कुछ ऐसे बना रहे हैं सैलड्स, उसमें यूज़ होता है तो वो एक रखिए। एक फ्राइंग के लिए रखिए, जो कि फ्राइंग के लिए आप सनफ्लावर, ग्राउंडनट कुछ भी रख सकते हैं, है ना। वो एक रखिए जो हर महीने आप चेंज करते रहें। तो मस्टर्ड रखिए। तो ये 4 ऑयल्स ऐसे हैं जो आप, घी तो रखेंगे ही, बाकी 3 को रोटेट करते रहिए। So now we come to special populations. सबसे पहले जो which oils are best for children's growth and brain health? हाँ, एज ए सेड, घी जो होता है बहुत अच्छा है, और हमारी नानी दादी बचपन से मतलब खिलाती आ रही हैं, तो कुछ तो बात होगी घी में, है ना। True. तो जितना आपको घी फायदा करेगा गाय का, वो बोलते हैं उससे बहुत दिमाग जो है डेवलप होता है, वो इसीलिए है क्योंकि उसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं जिससे ब्रेन डेवलपमेंट हमारा बच्चों का अच्छा होता है। और बाकी आप बच्चे को कोकोनट ऑयल जो है वो भी दे सकते हैं, और बाकी जो घर में बन रहा है ना, जिस तरह का भी बन रहा है खाना, आप वही दीजिए। घी तो ऊपर से आप एक्स्ट्रा डालेंगे, बट जो घर में बन रहा है दैट इज सफिशिएंट। Which oil is recommended for elderly people or those with diabetes or hypertension? See, for people who have diabetes and hypertension, again they have to monitor their oil intake. They cannot be very liberal with their oil intake. It has to be under the prescription of a doctor or a dietitian. And again, which oils you said? I would recommend mustard oil and rice bran oil. Okay. And also flax seeds oil, because it is good for maintaining your cholesterol levels, and it has good omega 3. So flaxseed oil. Flaxseed is a rare name, to be Yeah. honest. No, flaxseed is something which has a lot of omega 3. So you can actually use it. और आजकल तो भी इंडिया में एवोकाडो ऑयल्स आ रहे हैं, तो बहुत तरह के ऑयल्स जो हैं, आप नए नए नाम सुनेंगे। बट आई बिलीव दैट यू शुड बी लोकल। जो हमारी ज्योग्राफी में उगता है ना, वो सबसे बेस्ट हमको सूट। तो अगर आप उस रीजन के बियॉन्ड वाला कुछ एक्सपोर्टेड या इम्पोर्टेड खाएंगे ना, वो कुछ टाइम के लिए फैंसी ज़रूर लगता है, बट कहीं ना कहीं वो आपके डाइजेशन को इम्पैक्ट, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, True that. कि आप जो भी है लोकली अवेलेबल है जो ऑयल, उसको प्रेफर कीजिए rather than going in for imported fancy product. Are there oils that support hormone balance, especially in women? हाँ बिल्कुल, यू नो देर आर ऑयल्स लाइक योर सेसमी हो गया आपका, देन फ्लैक्स सीड्स हो गया, देन नट्स, यू नो सीड्स लाइक होल सीड्स, आई वुड से, नॉट just oils but whole seeds like your sunflower, pumpkin, hemp seeds. They all are very good, and they should be taken for hormone balancing, especially in women who are in their reproductive age and who are suffering from any kind of PCOD or any kind of hormone issue. Now we come to a tad bit of practical and lifestyle part. So, is it necessary to switch oils periodically? Yes, very much necessary. You should rotate your oils, change your oils periodically, and you should do it mindfully and consciously. How should oils be stored to preserve their quality? See, most of the houses there is a question that whether we should use the fried oil, like when we are doing frying, तो जो तेल हमारा जो है उसको रीफ्राई तो हम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बार बार फ्राई करने से उसमें टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, एक्रिलामाइड बनता है, तो ऑल दीज ट्रांस फैट्स बनते हैं। ऑल दीज आर टॉक्सिक एलिमेंट्स विच वी शुड नॉट कंज्यूम, ये हमारी बॉडी में ही जाने हैं, तो हमको रीफ्राई तो नहीं करना चाहिए। एक बार फ्राइंग करके उस ऑयल को छान कर हमको रख लेना चाहिए, और वो ऑयल हमको अलग अलग सब्जियों में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी प्रेपरेशन, फूड प्रेपरेशन में। एंड अदरवाइज ऑल्सो ऑयल्स शुड बी बॉट इन लिमिटेड क्वांटिटीज एंड नॉट परचेज्ड इन बल्क, और उसको ग्लास जार में स्टोर करना चाहिए, प्लास्टिक में नहीं, बिकॉज अगेन देर इज़ एन इशू विद माइक्रो प्लास्टिक्स एंड ऑल। और ऑयल्स को डार्क प्लेस पे स्टोर करें, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट ना हो, बिकॉज लाइट, हीट
ऑक्सीजन या मॉइस्चर की प्रेजेंस में अगेन दे विल डिग्रेड एंड डिकम्पोज एंड फ्री फैटी एसिड्स विल बी फॉर्म्ड. तो उतना ही उनका ब्रेक डाउन होगा और उनका क्वालिटी जो है वो खत्म हो जाएगा. Foreign bodies might Correct, affect correct. them. What are your views on trendy oils like avocado oil, rice bran oil, or flaxseed oil? See, flaxseed oil, I would say, I would rate them rather. So, avocado oil is something which is new to me also, and I would rate it like somewhere at a scale of 5 from 10. आई वुड रेट. तो ठीक है, बहुत फैंसी है, बट देखिए हमारे इंडिया के लिए अगर हमें देखना है तो फैंसी वर्ड इट डजंट सूट अस, क्योंकि हमारे बहुत सारे पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन है, तो वो लोग कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे इतने महंगे ऑयल्स, है ना. तो ये सब जो है जितने जो हमें हमें जो गुण है एवोकाडो में मिल रहे हैं वही सेम गुण हमें मस्टर्ड में भी मिल जाएंगे. तो जो हमको एवोकाडो में मिलेगा वो हमको अमरूद में भी मिल जाएगा, है ना. तो क्यों ही हमें फैंसी फ्रूट्स फैंसी फूड्स की तरफ भागना है. Are cold press and organic oils worth the higher cost? See, I would say cold pressed oils definitely they are good because they retain all the nutrients, and they should be bought in less quantity only. And organic is something different. Organic is when you are not spraying any pesticides or chemicals on the crop. तो अगर आप जो उगा रहे हैं क्रॉप्स या जो भी आप नट्स एंड सीड्स उगा रहे हैं उस पे आपने कोई छिड़काव नहीं किया, कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला है, और वहाँ से जो हमको तेल मिलेगा दैट इज़ ऑर्गेनिक. तो डेफिनेटली दे आर एक्सपेंसिव, बट आई वुड से इफ़ यू कैन अफोर्ड इट देन नथिंग बेटर देन दैट. How can I reduce my dependency on oil without compromising taste? आजकल तो बहुत सारे रील्स आ गए हैं जिसमें कि ऑयल बिना यूज़ किए वो क्या क्या बना के दिखा रहे हैं. तो यू डेफिनेटली कैन डू दैट. मतलब अगर ज़रा सा भी हम लोगों को बचपन से ना हमारे मम्मियों ने इतनी तल तल के वो जो पूड़ियाँ और स्नैक्स जो तले हुए वो इतना सेट हो चुका है कि हमको लगता है कि तेल के बिना ज़िंदगी ही नहीं है. हमारे यहाँ पे तो पकौड़ियों के सिवा बारिश नहीं जाती. हाँ, तो फिर वो इतना सेट दिमाग में फीड हो चुका है कि वो हमें लगता है ज़िंदगी ही नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तेल के बिना भी बहुत अच्छे से खाया जा सकता है, और इनफैक्ट आप उबली सब्जी खाइए, है ना. आप आजकल तो एयर फ्रायर है, उसमें हल्का सा ऑयल का स्प्रे करिए एंड यू आर गुड टू गो. We have many options. We have many options. The only thing is you need an intention. We are almost at the end, but I have something fun segment for you. अरे वाह. So I'm gonna name a type of like fat, and you're gonna rate it, be it saturated or unsaturated. Okay. Okay. So first is our desi cow ghee. I would rate it 10. 10 on 10 on, yeah, 10 on 10. Groundnut oil, 7. coconut oil, 6. rice bran oil, 6. sunflower oil, 7. flax seed oil, I would say 6. olive oil, 5. avocado oil. 2. One we hate the most, palm oil. 0. And that was fun. On this Yes. note, we are done for Thank today. you so much, Ketki. It is such an honor to be here. Pleasure is all ours, Poonam. Thank you. And thank you for being here on our first segment. No, we it are was gonna really meet fun. more. Yes, This was the definitely. very first episode of Poshan Gyan. Poshan Gyan. Yeah. Yes. So we are going to continue with more such episodes and series on Poshan Gyan. And Poonam is gonna be Yes. with us Often. often. Yeah. Yes. Listeners, see you soon in the next episode of Poshan Gyan. Till then, keep listening to Bol Hyderabad 90.4 FM. RJ Ketki signing off. Ooh.